remaining vacant into affordable rental housing accommodation. They can become affordable rental housing complexes, and this shall be done on a PPP mode through concessionaire agreements, through which they can invest somewhat some money to keep it up and also somewhat some money to make it ready, and then derive the rental, like the way the roads have, the toll little collections. Similarly, here they can collect small amount of rent and make some arrangement. Incentivizing also state governments to do the same. Central government organizations will also undertake in similar lines. The detailed guidelines will come from the ministry sooner. So urban migrants, urban poor now can look forward to having at least some basic rental accommodation for themselves. प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब के लिए जहाँ वो काम करते हैं शहरों में, वहाँ पर कम कीमत पर उनको किराए पर मकान मिल पाए, रहने की सुविधा मिल पाए, इस बड़ी योजना का संकल्प लेकर मोदी जी आए हैं। और मेरा मानना है कि जिस तरह से हर घर को बिजली, हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम, हर व्यक्ति का बैंक खाता खोलने का काम, हर बहन को गैस सिलेंडर देने का काम, और 2022 तक हर गरीब को सर ढकने के लिए छत देने का काम मोदी सरकार करने वाली है, उसी तरह से एक बहुत बड़ी योजना ये भी है कि कम कीमत वाले कम किराए वाले ऐसे घर आने वाले समय में मिलेंगे, और जिसका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस योजना को लाया जाएगा, जो कि हमारे अब के बने हुए घरों को भी उसमें इंक्लूड कर सकती है, जो सरकार के अभी बने और कुछ जगह खाली होंगे। उद्योगपति अपनी ज़मीन पर बनाना चाहें तो उनको भी इंसेंटिवाइज करके करेंगे, ताकि वो भी अपने काम करने वाली मजदूरों के लिए अपनी फैक्ट्री या उसके आसपास रहने की व्यवस्था बनाएं, या राज्य की सरकारों को, उनकी एजेंसियों को हम लोग प्रेरित करेंगे, लाभ देंगे, ताकि वो भी अपने राज्य में काम करने वाले ऐसे मजदूरों के लिए सुविधाएं तैयार करके दें। I move over to the Sishu loans of Mudra. This is a way in which we are going to help the smallest of small credit takers from the banks, where after the RBI giving 3 months moratorium, when they come back to have to pay the interest, the EMI, they will have a little problem, and we want to support them with some interest subvention. Incentive being, if you pay in time promptly, you get the 2% incentive, interest subvention incentive. So the current portfolio of Mudra Sishu loans, Mudra has 3 different types of loans. The Sishu is up to 50,000 is what they take as loan, only 50,000 rupees or less. People who have taken loans 50,000 or lesser, after the 3-month moratorium, when they come back to paying the EMIs, will have for the next 12 months an interest subvention support which will be of 2%, and that support will entail a total relief of 1,500 crores, which is for all the Sishu loan holders. Now, I just want to give you a broad indication of number. I don't think it's possible for me to straight away tell you the exact number, but I can indicate to you, because up to 50,000 will mean some people will have 10,000, some might have 15,000, some others might have 20. So actually, to get the actual number of beneficiaries, I might need a little more time, but roughly, if this outstanding is 1,62,000,